Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Waseem Anwar from पाकिस्तान। काफ़ी अरसे के बाद आज मैं एक बार फिर लाइव के साथ हाजिर हूँ और आज 22 जून 2024 है और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस लाइव के लिए क्योंकि अभी जो रिसेंटली अपडेट्स आई हैं बिलिंग एड्रेस के हवाले से ओ वेरीफाई के हवाले से, तो बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो मेरी कोशिश थी कि चलो वन बाय वन जवाब दूं, लेकिन मैंने सोचा कि एक लाइव सेशन कर दिया जाए और इसी दौरान मैंने स्टडी भी किया इंटरनेशनल लीडर्स को और उनसे बात भी की और उसके बाद मैं ये सेशन कर रहा हूँ ताकि आपको जो लीडर्स का ख्याल है और जो मेरा अपना ओपिनियन है उसके मुताबिक मैं बात कर सकूँ। तो आप सब लोगों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के लिए। और अभी जो मुझे चैट में जिन्होंने ज्वाइन किया है, मोहम्मद जमान चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, राजा मंसूर साहब हैं, दयानंद्रा जी हैं, एमडी काशिम हैं, अंजना दास हैं, अमल फतेयार, हेलो एवरीवन, हेलो अमल मैम, राउस साहिब पांडिव जी हैं और आचार्य जी हैं, अनूप जी हैं, रिपोन हुसैन हैं, अमर नामादास जी हैं, महेश भट्ट जी हैं, एम केली जी हैं, एम केली ऑलवेज थैंक यू वेरी मच केली जी, आप एक बड़ी डेडिकेटेड फाउंडर्स लेडी हैं जो कि हमें हर वेबिनार में नज़र आती हैं और आपकी डेडिकेशन पे कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच ये सेशन ज्वाइन करने के लिए माना शाह जी हैं, सुशील शाह जी हैं, सुरेश कुमार नाइक हैं और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले सका। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने उस पर मेंशन भी किया है, तो लेकिन हम थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो पिछले दिनों कुछ हुई, जैसे कि मिस्टर आयश मुफारे के हवाले से कि उनको सर्जरी हुई थी माइनर सी, हम सबको पता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जस्ट अ मिनट, जी सबसे पहले तो जो प्रीवियस जो ओन पैसिव 360 गुजरा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मिस्टर आयश मुफारा ने आपको पता है कि लास्ट मई में बात की थी कि कुछ 2 हफ्ते पेंडिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चनिंग भी की कि उसके बाद हमारा विड्रॉ वगैरह सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। बट ये था कि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा मसला है और मिस्टर आयश मुफारा जो बात करते हैं वो भी यानी काफ़ी कोड वर्ड्स में बात की जाती है। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ज़रा मुझे मैसेज करके बता दीजिए प्लीज़। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बात कर रहा था कि पेंडिंग विड्रा के हवाले से पीछे न्यूज़ आई, यूपीआई पेमेंट के हवाले से आई, प्रोसेसर्स के बारे में आई। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारी ओन पैसिव 360 हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, उसके बारे में बात करूंगा। और आपको पता है कि एक हमारे एक थोड़ा इशू है ये कि हम लोग बहुत जल्दी पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक न्यूज़ आती है उसकी अनाउंसमेंट का भी ख्याल नहीं करते, हम खुद से सोच भी लेते हैं और रिजल्ट भी निकाल लेते हैं और फेल भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है इन सब बातों के लिए। अब जैसा कि अभी हमने पॉपअप देखा था जिसमें यूपीआई पेमेंट के हवाले से बात की थी और कार्ड पेमेंट के हवाले से बात की थी और कुछ लोगों ने कार्ड के ज़रिए पेमेंट भी शुरू कर दी थी, कार्ड पेमेंट ओपन हो गई थी। बट उसके बाद वो पॉपअप रिमूव हो गया, उसके बाद वो ऑप्शन भी उन्होंने रिमूव कर दी। एक्चुअली एक प्रोसेसर के लिए एक टेस्टिंग था, वहाँ उन्होंने ये करनी थी कि पेमेंट के हवाले से, क्योंकि हमारा जो भी जो प्रोसेसर हैं हम बहुत सोच समझ के अभी स्टेप उठा रहे हैं। जो भी अगर पेमेंट भी करनी है तो कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि पब्लिकली आके टेस्ट होते हैं, तो वो 100% टेस्ट हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है
और इंशाल्लाह ये जो पेमेंट ऑप्शन है यूपीआई के हवाले से, तो वो भी आपको बहुत जल्द नज़र आएँगी। हमारा जो अभी रिसेंट जो पॉपअप आया है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे जो रिसेंट पॉपअप आया ज़ाहिर है उससे पहले जो पॉपअप आया था जो हमारे यूपीआई पेमेंट के हवाले से वो रिमूव हो गया था, नया पॉपअप आया है। तो इसमें ये था कि उन्होंने यही मेंशन किया कि हमारा जो न्यू पेमेंट प्रोसेसर है वो इस चीज़ को चेक कर रहा है इन चीज़ों को, और इसकी वजह से और ये जो टेम्परली ये प्रोसेस है उसको कैंसिल भी कर दिया और ये ऑप्शन भी रिमूव कर रहे हैं। बट डोंट वरी, ये एक प्रोसेस है और हमारे अगर पेंडिंग अगर हमें कुछ चीज़ें अगर हमें अचानक कोई चीज़ नज़र आती है हमारे ओईएस में, एक ऑप्शन ऐड हो जाती है, तो जब तक उसकी अनाउंसमेंट ना हो हमें एक तो उसका रिज़ल्ट नहीं निकालना, उसको क्लिक नहीं करना, उसको फ़ौरन नहीं करना। एक बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि वो एक टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि वो चीज़ आप कर लें और बाद में उसको दोबारा अनडू करने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, सपोर्ट से मदद लेनी पड़े। तो इससे बेहतर है कि आप वेट कर लें। हम समझते हैं कि इसके बाद ट्रेन छूट जाएगी, हमने अगर ये ऑप्शन ना की। तो यही वजह है कि बिलिंग एड्रेस के हवाले से भी काफ़ी लोगों ने ये बात की, उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे जो क्वेश्चन आता है पेंडिंग विड्रॉ के हवाले से आता है। तो पेंडिंग विड्रॉ ये सब चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यूपीआई पेमेंट की बात हो रही है। तो आप और लेकिन ये नेक्स्ट जो पेमेंट्स होगी बैंक के थ्रू होगी। आपको पता है कि मेन इशू यही था, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हो पा रही थी और पहले तो सिर्फ पे आउट का ही मसला था। लेकिन ये जब प्रोसेस होगा तो ये पे इन भी होगा यूपीआई के थ्रू और पे आउट भी होगा, यानी आप इसे निकाल भी सकेंगे और परचेज करके ये चीज़ें भी ऐड शो कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पेंडिंग विड्रॉ आ जाए, हमारी जितनी भी पेमेंट आए, चाहे वो $100 हो या $10,000 हो या $20,000 हो, हमने वो पब्लिकली शो नहीं करनी। हम जस्ट ये बात तो कर सकते हैं कि रिसीव पेमेंट वगैरह, लेकिन इसके अलावा हम ये बात भी नहीं कर सकते कि हमने इतनी अमाउंट हमने रिसीव की। ठीक है? एक बात ये, क्योंकि कंपनी की ये प्राइवेसी का मसला है और आपने ये चीज़ें नहीं करनी। बहरहाल ये गुड न्यूज़ है इंडिया के फाउंडिंग मेंबर के लिए कि यूपीआई पेमेंट बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएगा। तो ये यूपीआई पेमेंट का होना ये कोई आसान काम नहीं था। ये बहुत मुश्किल था, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी उसका भी सामना करना पड़ा, फिर कुछ अप्रूवल हुई, तो ये सब मिला-जुला के ये काम ये हो गया। अब और उसकी पेमेंट आपको पता है यूपीआई की जो पेमेंट है वो वो बहुत फ़ास्ट होती है और ना सिर्फ ये इंडिया में है बल्कि दूसरे कंट्री में भी ये पेमेंट चल रही है, जिसके बारे में हमने पॉपअप में पढ़ा था। और एक और न्यूज़ है कि हिम्मत लोहार जी हैं, जो इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हैं, उनकी इंजीनियर मोहम्मद कमाल से मुलाकात हुई दुबई में और इसके लिए वो काफ़ी 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी उनसे बातें डिस्कस की और सीईओ के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा जो हमारे मिस्टर मुफारे हैं आप बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द वो आपको सामने में नज़र आएंगे। और ऑन पैसिव के हवाले से उन्होंने बात की, ये बहुत जल्दी जो जल्द से जल्द ग्रो कर रही है और ये नॉर्मल कंपनी नहीं है। और क्योंकि हम हार्ट के साथ काम करते हैं, दिल के साथ काम करते हैं, हमने अपना एक ट्रेंड सेट किया, हम दूसरे को ट्रेंड फॉलो नहीं करते। तो हम ट्रेडिशनल तरीके पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से फिर एप्पल के हवाले से भी बात की कि बहुत जल्द हमें एप्पल भी मिलेंगे लेकिन अपने वक्त पर। तो एक ये 10-12 मिनट की वीडियो है, आपने देखा भी होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे सीईओ खुद सामने आ रहे हैं और सामने लोगों को इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही जाहिर करनी पड़ती है और हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिलिंग एड्रेस के हवाले से। अच्छा, बिलिंग एड्रेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हालांकि ये एक नॉर्मल अगर ऑन पैसिव से हटकर बात की जाए, अगर हम बिलिंग एड्रेस की बात की जाए, बिलिंग एड्रेस होता है क्या? बिलिंग एड्रेस एक जब भी किसी कंपनी या बैंक या किसी भी ऐसे इदारे में एक बिलिंग एड्रेस हमें दिया जाता है जहां पर आप अपने बिल या अपनी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिसीव कर सकें। तो नॉर्मली जो बिलिंग एड्रेस होता है वो दिया जाता है जो जहां पर आपको लेटर मिल जाए या चीज़ें मिल जाएं जो डॉक्यूमेंट्स मेल की जा रहे हैं।
अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे फैसलाबाद में रह रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इस एड्रेस पर मैं नहीं समझता कि मेरे जो लेटर रिसीव होंगे वो सेफ़ होंगे, तो मैं लाहौर में जो मेरा एक और मेरा घर है वहाँ का एड्रेस मैं दे सकता हूँ, बिलिंग एड्रेस, ताकि हमें जो भी ऐसी जो चीज़ें मौसूल हों मुझे मिल जाएँ और मेरे एड्रेस पर मिल जाएँ। तो बिलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें मंगवाते हैं। इसके लिए ये भी हो सकता है कि आप उसी घर में रह रहे हो, नॉर्मली लोग यही करते हैं, आप जिस घर में रह रहे होते हैं, और लेकिन ये कि ऐसा भी होता है कि आप उस घर में नहीं भी रह रहे होते। और बैंक अक्सर ये जो बिलिंग एड्रेस है बैंक के हवाले से भी बात की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक के हवाले से ही बिलिंग एड्रेस हो। हम हमारा ऑन पैसिव का एक अलहदा प्रोसेस है, बैंक का अलहदा प्रोसेस है। लेकिन अगर बात की जाती है कि बैंक में जो एड्रेस दिया गया है, अगर आप वही दे दें तो जस्ट एक आसानी के लिए कि चीज़ें ज़रा मैच हो जाती हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं आता अगर इन केस अगर कोई बैंक की तरफ से या कंपनी की तरफ से इश्यू हो। तो थोड़ा-सा मैं ये बताना चाहता था, बिलिंग एड्रेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ आपके एड्रेस के लिए होता है। तो अगर ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव में ये जो बिलिंग एड्रेस है इसका ताल्लुक ओ वेरीफाई से बिल्कुल नहीं है, तो आपने परेशान होना है। तो मैं बात कर रहा था कि पहले तो हम कुछ इंडियन लीडर्स की बात करेंगे, बगैर मेंशन नाम किए, कि उनकी क्या राय है बिलिंग एड्रेस के हवाले से। और फिर इंटरनेशनल लीडर से जैसे कि मार्टी क्रीज, जेफरी मोरलॉक, माइकल विलियम और बहुत सारे सबसे मैंने क्वेश्चंस किए थे कुछ, और उनकी तरफ से जो जवाब आए उनको भी मैं बताऊंगा कि उनके क्या जवाब आए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इंटरनेशनल लीडर से बात कर रहे हैं, जो कि क्योंकि हमारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की एक ही ये एरिया है, तो यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की प्रॉब्लम अलहदा है बिलिंग एड्रेस के हवाले से। तो जो अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें और अमेरिका वगैरह की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे बिलिंग एड्रेस और चीज़ है। वहाँ पर ये होता है कि जब आप कोई जगह चेंज करते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये होता है कि अगर आप अपनी एड्रेस चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले कहीं और थे, बाद में कहीं मूव करके, तो आपको मैन्युअली जाके ये चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं करवा पाते, तो उनका वो पुराना ही चलता है सिस्टम। तो हम अगर किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से बात करते हैं इस हवाले से, तो वो अपना जो भी राय देंगे वो अपने एरिया के हवाले से देंगे। जबकि हमारे अगर यहाँ के इंडिया वगैरह के लोगों से बात की जाए तो लीडर से, तो पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो आपको एक थोड़ी-सी डिफरेंट बात कर सकते हैं। तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने एरिया के हिसाब से बात करनी है। तो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैं बता रहा था कि पहले इंडियन लीडर्स की बात करते हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं। उनमें से एक ने तो ये बात की है कि आपका बैंक का एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये आपने इसको फाइनल नहीं समझना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडर्स ने क्या बात की है। एंड में जाकर मैं आपको बताऊँगा हमें क्या तरीक़ाकार यूज़ करना है और कैसे करना है। देखिए, जो लीडर्स जो बात कर रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन याद रहे वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन पैसिव के अलावा जो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बट ये हमारा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे अलहदा रूल्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँ, जो वो बताएँ वो ना हो। ठीक है ना? इसलिए हमने पहले हम लीडर्स की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनली इसका हल सॉल्यूशन बताऊँगा कि हमने क्या करना है। ठीक है? तो पहले हम इंडियन लीडर्स की बात करते हैं। जो इंडियन लीडर्स ने बात की, उन्होंने एक ने ये कहा था कि बैंक का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है? और जब हम जब होता ही है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं कोई नया पैकेज, तो जिन लोगों ने तो पहले सब्सक्राइब कर लिया, उनका तो वो बिलिंग एड्रेस उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये कि वो बाद में ऐड कर सकते हैं।
बाद में ऐड कर सकते हैं या फ़ौरन ऐड कर सकते हैं, कोई इतनी जल्दी की बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो न्यू लोग जब जब सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं कोई पैकेज को, तो वो उन्हें बिलिंग एड्रेस की ऑप्शन नज़र आती है और कि वो अपना बिलिंग एड्रेस वहाँ पे शो करें, तो वो वहाँ डालेंगे, देन प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होगा। तो लेकिन ये कि जो पुराने लोग हैं, जो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तो बिलिंग एड्रेस ऐड नहीं किया। उन्हें ये ऐड इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि न्यू सब्सक्रिप्शन तो आपको पता हर दफ़ा आपको करनी पड़ेगी। ओ कनेक्ट की भी करनी पड़ेगी, ओ ट्रैकर आएगा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएँगी, तब भी तो आपको करना ही है। तो आप क्यों ना अब कर लें, ठीक है? अब क्या करना है उसके वाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने यही बात की है कि बैंक का एड्रेस बिलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप रिसीव करते हैं मेल्स वगैरह, और आपके बैंक वाला एड्रेस होना चाहिए। इन्होंने स्पेशली ये बात पे कहा कि बैंक वाला एड्रेस ही होना चाहिए। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और फिर एक ने ये कहा था कि बिलिंग एड्रेस करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। ये वो एड्रेस होता है जहाँ आप सब कुछ मंगवा सकते हैं, जो कि फ़िज़िकली आप जैसे ईमेल मेल हो फ़िज़िकली मेल के ज़रिए मंगवा सकते हैं, कोई जैसे कि कोई लेटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और इसके लिए वहाँ आपका रहना ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पर कंफर्टेबल हो वो मंगवाने के लिए, तो आप वहाँ मंगा सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रह रहे हैं, तो आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, तो आप वहाँ पर उस एड्रेस पे मंगवाएँ जहाँ पे आप चीज़ें रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई घर रेंटेड हो या अपना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि क्रेडिट कार्ड वाले जो है उनको हो सकता है कि वो एड्रेस पर वो कुछ एरर आ सकता है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो पेमेंट कर रहे हैं, उस पे एड्रेस कुछ और हो और वो आप बिलिंग एड्रेस कुछ और लिख दें, तो वो मेबी हो सकता है वो ट्रांज़ैक्शन फ़ेल कर दे इस बात पर। फिर उन्होंने कहा ये ओईएस है, ओईएस हमारा बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पे बिलिंग एड्रेस डालिए। तो ये पॉइंट उन्होंने रेज़ किया। फिर क्योंकि बिलिंग एड्रेस की कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये आपने याद रखना है, बिलिंग एड्रेस ये है, ये ओ वेरीफाई नहीं है, यानी इसका ओ वेरीफाई से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ जस्ट एक एड्रेस है जो आपने देना है, ताकि आप अपनी जो भी कोई चीज़ अगर आपने फिजिकली मंगवानी हो, लेटर वगैरह, तो उस एड्रेस पे आ सके। लेकिन अगर आप बैंक का डाल दोगे तो बेहतर है कि बैंक में ये है कि एक 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 यानी कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाती है अगर आप, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक वाला ही हो। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात भी की थी कि इंडिया वगैरह में स्पेशली जो स्मॉल सिटी है, तो वहाँ पर वो जब आप एड्रेस डाल रहे होते हैं तो वो कैश नहीं करता, तो वो उसके लिए आप वहाँ पे जो पिन कोड या ज़िप कोड में पिन नंबर डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है। फिर उन्होंने एक और बात भी की, कुछ लोग इसको मिसलीड कर रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। फिर उन्होंने आगे बात की, एक ने ये बात की थी कि ये जो बिलिंग एड्रेस वाली ऑप्शन है, आपको कोई इकोसिस्टम की ऐप में नज़र नहीं आ रही, इनको आपको वेब ब्राउज़र में ही नज़र आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको वेब ब्राउज़र पर नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग वेब ब्राउज़र में जा रहे हैं, तो उन्हें बिलिंग एड्रेस वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, तो उसका तरीकाकार ये है, आप उसको साइन आउट करें, उसको दोबारा लॉगिन करें, तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी। अच्छा, बिलिंग एड्रेस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, नाम मेंशन करना चाहूँगा, मनिंदर सिंह गोला जी की मैंने एक वीडियो देखी है, बहुत अच्छी है, और उन्होंने एक स्क्रीन शेयर करके और पिक्चर के थ्रू उन्होंने इसको समझाया है, और बहुत अच्छी तरह समझाया है। आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अच्छा, अब हम कर सकते हैं कि हम जो इंटरनेशनल लोग हैं, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उनमें से उन्होंने क्या जवाब दिया। तो उनमें से इंटरनेशनल जो तो उन्होंने ये बात की थी, एक ने कहा कि बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे आप अपनी बिल रिसीव करते हैं, सिंपल। तो हर एक ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना है। तो बिलिंग एड्रेस वो है जहाँ आप अपना बिल वसूल करते हैं। तो फिर एक ने कहा कि बिलिंग एड्रेस वो जगह होती है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपको मेल वसूल होती है, या आपका घर भी हो सकता है और किराए का घर भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है।
फिर एक क्वेश्चन मैंने ये उनसे पूछा था कि क्या अब हमारे आईडी कार्ड वाला होना चाहिए? तो तो क्या आईडी कार्ड वाला ही बिलिंग एड्रेस होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये एड्रेस आपका आईडी कार्ड वाला भी हो सकता है और उससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। समटाइम होता है आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ और होता है, लेकिन आप रह कहीं और रहते हैं, आपकी जो लेटर है कहीं और आप रिसीव कर रहे होते हैं, तो आप वो दे सकते हैं जो आपका, जहाँ पे आपने लेटर रिसीव करने हैं, वो आपको, हम वैसे तो कहते हैं जहाँ आप रह रहे हों, लेकिन बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जो जहाँ पे आप अपने लेटर रिसीव कर सकें। फिर एक और क्वेश्चन था कि क्या मेरा आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट कार्ड है और बैंक का जो बिलिंग एड्रेस है वो क्या सेम होना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने उस पर लेटर वगैरह रिसीव करना था तो एक ही एड्रेस होता है ऑब्वियसली, तो ये ऐसा होता है। तो फिर एक और क्वेश्चन किया था, क्या ओन पैसिव की में ये जो बिलिंग एड्रेस है, क्या हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे बिलिंग एड्रेस के हवाले से? तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोफाइल में आप जब ओ वेरीफाई होती है तो उसमें आपका नाम देखा जाता है, आपकी केवाईसी का आपका आईडी से नाम मैच किया जाता है, आपके चेहरे की पिक्चर को लिया जाता है, फिर इन सबको मिलाकर फिर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो बिलिंग एड्रेस एक सेपरेट चीज़ है। तो ये उन्होंने बात की। फिर एक बात कि एक ने कहा बिलिंग एड्रेस वो पता है जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, जब आप खरीदारी करते हैं तो आपका बिल इस पते पर भेज दिया जाता है, आपका बैंक स्टेटमेंट इस पते पर आ जाता है। अच्छा, लोग क्योंकि समझते हैं कि बिलिंग एड्रेस सिर्फ बैंक में ही आता है, लेकिन बैंक के अलावा भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का भी बिलिंग एड्रेस हो सकता है। और जब आप बिल रिसीव करते हैं तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन या कोई इलेक्ट्रिसिटी उसका बिलिंग एड्रेस होता है जो आप देते हैं, जहाँ पर आप बिल रिसीव करते हैं, तो ये भी हो सकता है बिलिंग एड्रेस। ठीक है, अच्छा, तो ये कि फिर मैंने ये पूछा था कि क्या आपके आईडी कार्ड वही बिलिंग एड्रेस एक जैसा हो सकता है कि नहीं? उन्होंने कहा जी डिफरेंट हो सकता है, आपका जो आईडी कार्ड वाला एड्रेस है और आपका बिलिंग एड्रेस डिफरेंट हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। फिर एक किसने क्वेश्चन किया था, मैंने उनको भेजा था कि जैसे कि कुछ अगर कोई पुराने एड्रेस किसी के आईडी कार्ड पे मेंशन है, वो नए एड्रेस पे शिफ्ट हो गया, तो क्या वो अपना नया एड्रेस एज ए बिलिंग एड्रेस दे सकता है? तो जो क्योंकि उनके आईडी कार्ड पे तो पुराना एड्रेस है, तो उन्होंने कहा कि तो अगर आप जस्ट आप अपने अगर आप एड्रेस को चेंज करते हैं तो जस्ट आप उसको बैक ऑफिस में भी एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। यानी ये जो एड्रेस है ये कोई इतना इशू नहीं है। जो लोग पहले रह रहे हैं ये पुराना एड्रेस इनका आईडी कार्ड में आप नए शिफ्ट हो गए तो वो अपना नया एड्रेस दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मुझे एक इस वाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप अगर पहला आपके आईडी कार्ड में पुराना एड्रेस है तो आप नया एड्रेस आप चेंज करवा लें, इसमें कितना टाइम लगता है? आप नया एड्रेस चेंज करवा लें या वो एड्रेस करवाएं जहाँ पे आपके लेटर रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि उन्होंने एड्रेस चेंज किया, पुराना घर बेच दिया, नया घर उनका रेंटेड था, वो उन्हें डाउट था कि वो हम चेंज करते रहेंगे, उसका एड्रेस नहीं दे सकते। देन उन्होंने क्या किया, अपने एक रिलेटिव का घर एड्रेस लिखवा दिया जहाँ पे वो लेटर रिसीव करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपकी डॉक मिल जाए, आपका पोस्ट मिल जाए, तो उसको बिलिंग एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। फिर एक बात की थी कि अगर मेरा मेरा आईडी कार्ड पे पुराना एड्रेस है लेकिन मैंने मकान चेंज कर लिया है, मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो गया हूँ, तो क्या मुझे वहाँ कोई प्रूफ देना पड़ेगा? क्योंकि यूटिलिटी बिल वगैरह तो लैंडलॉर्ड के नाम आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका इम्कान नहीं है क्योंकि ये केवाईसी नहीं है, वही बात की, ये एक सिर्फ एक बिलिंग एड्रेस है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक और बात की थी, अगर गलती से किसी ने गलत एड्रेस टाइप कर दिया तो क्या होगा?
उसमें तो एडिट की ऑप्शन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कोई नहीं, आप सपोर्ट में जाके बाद में चेंज करवा सकते हैं। सिर्फ आप उसको एड्रेस को सही करवा सकते हैं। अच्छा, फिर एक मैंने पूछा था कि जब ओ कनेक्ट की जब हम अदायगी करते हैं, तो मैं एक मैसेज नज़र आता है बिलिंग एड्रेस का, तो क्या वो आपका बिलिंग एड्रेस सेम होना चाहिए जो आपका आईडी कार्ड से, या अगर कोई दूसरा शख्स अपने आईडी का अपने कार्ड से ये पेमेंट कर रहा है, क्या उसके एड्रेस से सेम होना चाहिए या मुख्तलिफ होना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये इसके लिए बाद में आपको कंपनी बताएगी कि क्या इसका प्रोसीजर होगा। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इसमें इन सारी बातों में ये बातें तो सबने अपने अपने हिसाब से बता दिया, इंडियन लीडर्स ने भी बता दिया। और लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की है कि माइकल विलियम ने की है, उन्होंने कहा कि आप अभी इन चक्करों में मत पड़ें। आप अभी आपको मशवरा है कि अभी वेट करें, आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप बिलिंग एड्रेस अभी दे दें, ठीक है? और कोई आपको कोई इमरजेंसी नहीं है। हाँ, अगर आपने वो करना है, पैकेज करना है, तब तो आप दे सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा वेट कर लें। और कंपनी की अपडेट का वेट करें कि वहाँ पर वो कंपनी क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन तक पहुँच चुके हैं और वो इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ये तो मैंने लीडर्स की बात की, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है फाइनली कि जो लोग जिनका बिलिंग एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, मिसाल के तौर पर आपके आईडी कार्ड पे भी वही लिखा है, आपके बैंक में भी वही है, और आप वहाँ रह भी रहे हैं या फिर आप वहाँ लेटर रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि बिलिंग एड्रेस सम टाइम जैसे कि किसी का कोई आबाई घर होता है पुराना, जैसे बुज़ुर्गों का घर होता है, ग्रैंडफ़ादर वगैरह रहते हैं, तो वो उनका एक आबाई घर होता है जहाँ पे सब मिल-जुल के रहते हैं, बाद में वो अलहदा हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो रेंट के घर में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो लेटर्स के लिए वो वाला एड्रेस देते हैं अपना जो पुराना घर होता है, ताकि वहाँ उनको लेटर मिल जाए। क्योंकि उनको डाउट होता है कि हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम ये मकान कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वो अपने आईडी कार्ड में भी वो लिखवा देते हैं मुस्तकिल पते के तौर पर, परमानेंट एड्रेस के तौर पर, और टेम्परेरी एड्रेस पे वही एड्रेस लिखवा देते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं। और इसके अलावा बैंक में भी वही एड्रेस लिखवाते हैं। तो अगर तो ये ऑप्शन है, अगर आपको पता है, या फिर आप जिस घर में रह रहे हैं वही आपके आईडी कार्ड में भी, वही आपके बैंक में भी है, तब आप वहाँ पे जाएँ और ये ऑप्शन देखें, चेक करें और चेंज कर दें। अच्छा, उस पे भी हम बात करेंगे कि हम ये एड्रेस हमने कैसे चेंज करना है, किन-किन चीज़ों की एहतियात करनी है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, बट हम यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि क्योंकि अभी भी लोग आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूज़ हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि आप अगर आपका एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, ओके है, तब आप ये कर लें। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी भी कन्फ्यूजन है कि आपके आईडी कार्ड में पुराना एड्रेस था, अब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, या एड्रेस और है, या ऐसी चीज़ें, तो आप स्टॉप कर लें, होल्ड कर लें। अभी इन चीज़ों को मत कीजिए, जब तक न्यू इंस्ट्रक्शन ना आए। तो मेरा जो पर्सनली वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिलिंग एड्रेस जो यहाँ पर ऑन पैसिव में है, क्योंकि ऑन पैसिव में हम ओ वेरीफाई एक अलहदा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो उसमें एक तो आपकी पिक्चर माँगी जा सकती है, ओ वेरीफाई में क्या, अच्छा, एक ओ वेरीफाई भी बात करेंगे पहले बाद में। तो लेकिन ये कि क्योंकि और वेरीफाई में काफ़ी हमें ऐसी चीज़ें दे चुके होते हैं, तो हमें बिलिंग एड्रेस पे कोई भी वो क्योंकि हमने वहाँ पे चीज़ें मँगवानी, तो इसलिए आपने वो एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप सपोर्ट में जाके वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी लाइव चैट में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब दूँगा इस हवाले से। आई होप कि बिलिंग एड्रेस के हवाले से एक तो आपने अभी कोई जल्दी नहीं करनी, और इसका अगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, जैसे कि मेरा जो बिलिंग एड्रेस है मुझे पता है बिल्कुल ठीक है,
मेरे आईडी कार्ड पे भी वही है, और जब मैं रिसीव भी करूँ लेटर तो मैंने लिख दिया, ओके हो गया, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं ये जो पैकेज वगैरह मैं पहले करवा चुका था, लेकिन मैंने अपना बिलिंग एड्रेस चेंज कर दिया। लेकिन एक और बात है, अगर आपने बिलिंग एड्रेस पहले से लिख भी दिया, तो जब आप पेमेंट करेंगे ना, जब भी आप पेमेंट करेंगे, चाहे ओ कनेक्ट चाहे कोई भी हो, वैसे तो एक अगर कोई फ्रेश बंदा है जिसने बिलिंग एड्रेस नहीं लिखा प्रोफाइल में जाकर, तो उसको तो ऑप्शन आती है कि आप बिलिंग एड्रेस लिखें, तो वो आपको ऑटोमेटिक इंटरेक्ट ले जाता है आपकी प्रोफाइल में, जहाँ पे आप जाके ये चेंज करते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कैसे चेंज करेंगे। बट अगर आपने पहले से बिलिंग एड्रेस लिख दिया है, आप पैकेज बाय करने लगे हैं, तो आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या इसी बिलिंग एड्रेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तब भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हर दफ़ा तो आपको ये करना पड़ेगा, तो आप ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ही कोई चीज़ भेज देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है कि जो कार्ड हमारा डेबिट कार्ड वगैरह उसके लिए एड्रेस चाहिए हो सकता है ये जो प्रोसेसर है इसकी डिमांड हो, और ये हमारी ओ वेरीफाई की डिमांड हो। इन सब चीज़ों के प्रोसेस के सिलसिले में ये चीज़ें चल रही हैं, और चीज़ें लेकिन हमें इसमें परेशान नहीं होना, हमने अपने बिलिंग एड्रेस कौन सा डालना है। अच्छा, इसमें कुछ मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब ने कहा, अगर ओ वेरीफाई के लिए एनआईसी एड्रेस ओल्ड हो, अब न्यू हो, तो उसका क्या इशू तो नहीं होगा। अगर आपके एनआईसी पर एड्रेस पुराना है, अब नया एड्रेस है, तो एक तो आप चेंज करवा लें। तो अभी आप, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अभी उसका बिलिंग एड्रेस मत लिखिए जब तक न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। लेकिन इन द मीन टाइम आपको ये तो पता चल गया ना कि ये इशू आ रहा है, तो आप अपना एड्रेस अपडेट कर लें इन द मीन टाइम। तो ये क्यों नहीं कर सकती, तो आप अपना एड्रेस क्यों नहीं करवाते, जब आपको अच्छी तरह पता है कि ये इशू हमें फेस करना पड़ रहा है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन किया है हनुमान जी ने, सर मेरा बैंक में आदेश है ऑफिस का, एड्रेस तो है ऑफिस का, तो पर रेंट के रूम में रहता हूँ, तो क्या होगा। देखिए, अच्छा आपके बैंक में ऑफिस का एड्रेस है। देखें हनुमान जी, पहले तो एक बात बता दूं कि आप बिलिंग एड्रेस के लिए ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं, अगर आप समझते हैं वहाँ आपके लेटर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बिलिंग एड्रेस में कहीं नहीं मेंशन किया कि आप ये करेंगे। और तो, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलिंग एड्रेस में यानी आप ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड करें जब तक न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं आती है। तो वी हैव अ सरप्राइज गेस्ट हेयर, सो वेरी warm welcome to Jeffrey Morlock, sir. Hello, sir. How are you? Thank you very much to join this Hello, session. hello. I'm doing wonderful. Thank you. Thank you very much, sir, to join this session. So, sir, today's session is very difficult to teach the founding member about billing address. Although billing address is not a big issue, it's simple. So, you want to say something about this? Yeah, concerning billing addresses, sure, sure. But you're right. You're absolutely right. They're not that big of a deal. Mr. Hmm. McCarr is going to make sure that within OnPassive, within the workings of the back office and the things that are back there, we're going to have what we need to put things back there. One of them is obviously going to be the billing address. The billing address is nothing more than a residence or an address, a PO box, something where bills get sent to so that you get them. It doesn't necessarily mean it's got to be where you live, but it's a billing Hmm. address where you have bills sent to. That can be either your address or a parent or a work, whatever. It's got to be a good address where you get your bills. That's all. That's all. Actually, few people are thinking this is the procedure of O verify.
That's why they are thinking about documentation like that. How we will provide the documents. Uh, for example, some people uh, uh, some people have some people have issue in billing address like that. They are living on rent. The landlord, the billing address and the name of landlord. So they're thinking. I think this is the procedure of KYC. Uh, then we match the name of utility bill and your and what do you want to say about it? Um, I think that any way that we do the whole billing address thing, let me put it this way: Uh, each each scenario, if it presents problems in presenting what is required, I'm sure it'll be dealt with on a one-to-one basis. But if you've got somebody that's living at a residence and that residence is not owned by, say, for instance, your landlord or even your parents or maybe some in-laws or friends, then the requirement is going to be that you provide something that shows you are living there. So if the utility bill is not in your name, then you would think that it would be a document or a notarized affidavit, something from the landlord saying, yes, Mr. Waseem lives here. He's lived here for 6 months. These are the terms of the agreement. He's been here and he's here in good standing. We provide that. Um, with each scenario, I am very, very sure that we could probably talk to the uh, the support team, open them up and say, hey, here's my scenario. I don't have a utility bill in my name, or I don't have a residence in my name. What do you require? And you explain that scenario to them. They come back and say, oh, that's your landlord? Okay, get your landlord to write a letter, and have it notarized so that it makes it legal, and we'll accept that. So they'll work with you so that you can come up with whatever it is that you need. Sir. Now, don't get this confused. Now, this is not the O-Verify. Okay, that O-Verify is a tool. It's actually a product. And O-Verify has its own set of credentialing that it's going to be asking for to find out and to make sure you are who you say you are. In that particular case, it could be a government ID, it could be your driver's license, or it could be even a university ID, perhaps. Some official ID they're going to require. Sir, I got a question from India, Chandan Bera. He's saying uh, he put by mistake in address one his name, and in address 2 he put the address. So what should I do? Actually, I don't know everything mentioned very clearly. Address 1, address 2, and one more important thing. When we put the value of in any option like that, so we see the static in red color. The static is a compulsory option. Like in address when red static mean we have to put this value must, but we can leave the address 2. Address 2 we should use when address 1 is very long, because address 1 accept only maximum 100 character. Sometimes we have a very long address, so then we can use remaining address part in and the remaining part is in address 2. So and remaining option are like city, province, postal code. I don't think so. It's very difficult to understand. What you want to say about Yeah, it's not, and it won't be. It won't be that difficult. Mr. Mufara likes to make things easy. I got a sneaky suspicion he'll do that. Um,
If we run across a situation that is not a normal situation, then they'll work through it. They always do. It's easy enough. Hmm. I think we should not put the value of would not put the billing address until we get any news from back office. If you are confused, um, I have I use my edit option. I put the billing address. Uh, I complete my billing address, but I'm sure because my bank address, my residence is accurate. I know. That's why I have completed my steps. But if you are doubtful about your you have an old address, you have a new address, you have something. I think you should wait. But people are very confused, and few people are telling I in address one you must should put the name, but I think this is the address line. We no need to put the name. So, what do you say? Well, I think that whatever information is back there is required is delineated enough to where you shouldn't get too confused about it. But if you run across circumstances where perhaps you put an address in and now you're going to move, or you've shifted the address somewhere, if it doesn't allow you to change it again, then just reach out to the support team and say, "Hey, look, I've got this particular situation. You know, I put my address in. It doesn't let me change it. I've now moved my address. I need to change it. What do I do?" They'll come up with something. I mean, they'll let you know what needs to be done. But my guess is you should be able to change that as often as you need to. And I would certainly encourage you, be careful when you put in information in there, because if you Mm. put the wrong information in, that might not be so good down the road. I don't know. And few leaders are saying billing address should be matched with government ID and your billing bank billing address. So I think this is not necessary. Uh, if you are doing this, it's good, but not necessary. What do you say? Yeah, the billing address is that is simply what it is. It is an address that your bill can go to, that you can get it. Now, many times this will match your residential address. Many times it will be the same address that you have on file, or a home of record for your bank or any other institution. Doesn't have to be. I mean, you could have a physical address, and you might say, you know what, I don't want bills coming to my physical address. I'm Hmm. going to have a PO box, and that's what you give for your billing address, simply because you don't want bills coming to your physical residential address. I mean, the whole idea, whatever address you give them, it just needs to be an address that you can get bills at that address, so that you can get the bills in your possession. That's all it is. It's not real. It's not rocket science. You're right. It might match your residential address. It could Hmm. match your bank address or your work address, but it doesn't have to. It just needs to be good enough address to get the bills to you. Yes. So some I think some people ask this question when we try to pay open act package. Now we see a message appear for billing address. His address should match with the card billing address, because sometimes some other person is paying payment for his or her ID. Obviously address will be different. I think we should wait. This is very deep questions. Now, yeah, if you're talking about a specific credit card or a Yes, debit yes, card, yes, yes. then they've got to have the billing address that's associated with that card. Oh. Okay, that's a whole different scenario. If you're Mm. using say you want to pay for O Connect, and you're using a credit card, and they ask you for the billing address, that's because, as part of verifying who you are with that card, they're going to Mm. make sure that what you give them
matches the billing address to that card that the credit card company has on file. So that's a little different rather than just a standard billing address. If they're looking for the billing address for your card, it's got to match what the credit card company has on file as your billing address. Yes, and for example, I did not subscribe my O Connect, uh, and um, I have put my billing address on my profile, but when I tried to buy the package, a message appear. Do you want to use same billing address or you want to change? So it's mean this information for card because Yep. Yeah, if you're going to make a payment, they're wanting the billing address for the card that you're going to be using. hmm, or I think it is best for a founding member to wait before updating the address. Once updated, cannot be changed for now. So I suggest we wait. No need to rush. So we are panic. What happened? Billing address has come. So same happen first time. Many founding members registered as a customer. Remember Yeah. 2022. So uh, we are very fast actually. We are very fast. We no need any instruction. So we do first, then think what happened, what we have done. So 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 It's I been quite the journey, hasn't it? We've had a good time getting here. so, I was thinking this is very simple question we are trying to teach, and every person's asking same question. Whenever they watch the video of leaders, they are telling very clearly how you do this, but I don't know uh, what should I do. So recently, the pop-up came. I'm talking about previous pop-up about UPI payment and card payment, and now the pop-up removed and next pop-up come. So Yeah. so Yeah. many people That are caused a very. lot of confusion, didn't it? You gotta love it though. But even that pop up, as confusing as it is, or was, actually it is since it's still up. Mm, It is still good news because that mm, tells us there's progress being made in the background. Now, my opinion, my interpretation is Mr. Mufara came on and said, "Hey, look, we've got the payment processing system up. We're working with it. We're doing things." A few days later, this last pop up came up and said, "Hey, we were trying something. This is what we did. We've now taken that down." That to mm, me is saying, you know what? We tried to do something we thought might work and we decided better of it. So we're going to go a different route. That's my opinion. And we know they're working in the background. They're doing things behind the scenes that we don't see. And this is not an easy thing to do. I mean, this is a very, very complex system that they've got going on in the background. But we know that it won't be too long before they have the payment processing system up. Now, Mr. Mufaris told us a few things. 3 weeks ago, he said, look, we're not going to be taking any more money in until we can get these payment requests out. We've got money that needs to be paid out, so we're not going to be taking any more money in until that's done. I don't believe that's changed, so I'm not too worried about it. I did see, I think it was yesterday or the day before, he actually extended another 10 days on OConnect. I think he will continue to do that until we can get some resolution with the payment systems, because until that's in place, he's not going to be taking money in. So there's no need for us to be worried about what is my billing address now if I'm going to be buying OConnect, because you can't buy OConnect now anyway. He's going to keep renewing that. So I like the idea that he gave us that first pop down or pop up, the drop down that said, hey, we've got this payment processing system in place now,
And then a couple of days later, he said, "Oh, we're doing something else. We've taken that away." I like that because that keeps us in the loop and lets us know, yeah, we're still doing things in the background. We're still trying some new and different things. We're working through this. That to me is progress, and that to me is good news. So just breathe easy. Things are happening. Yeah. Yes. So we know the own passive is different. We are not follow that trend, other people, other companies trend. So we are creating our value. So what you want to say the founding member who are planning regarding pending withdraw or payment, I think they should need to understand the company is more than money. So company is big. Well, yeah, but you can understand why there's a little frustration. I mean, it's been a few months, but I think the impetus or the mass of the frustration that we're feeling is simply because we don't know what's going on in the background, and we let our egos get in front of us a little bit sometimes and say, we need to know these things, and we've been promised things. And so yeah, there's some frustration, but you're absolutely right. It's a lot more. On passive is much, 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 much more than just looking at trying to get a payment processor done or just trying to earn some money. We're talking about a company that is already exercising a global reach and is already in so many countries and so many cultures using and trying to work with so many currencies that it's got to be mind-boggling to put this together because I mean, literally millions and millions and millions of lines of code have to go into all the stuff they're creating, not to mention the AI and all the software and the ecosystem and the whole nine yards. Now, if you're focusing on just that little bit where you look in your office and you've got a few O coins in there and you're like, oh, I want some of those O coins. If that's all you're focusing on, life is going to be kind of hard for you because where you put your mental energy, where you put your focus, that's going to get amplified. That's what's going to, it's going to mean a lot more to you. If you get the big picture, then that little bit of time that we're spending waiting on the payment processing to come in, it's going to mean a little less because there's so much more to what we're doing. It's on the way. I mean, Chris Johnson is always saying it. It's coming. It's coming. And he's right. There's not much more we can really say, except it's coming. We know that it's coming. They're working very hard in the background. Mr. Mufar, I don't know how the man does it. Sometimes I know he doesn't sleep a lot. Most. I'm sorry. Go ahead. I'm just talking. Chris Johnson, most energetic leader of on passive. And yeah, he's got a lot going on. how's Mr. Mufare now? I hope we'll see soon. I'm sure he's fine. I'm sure everything's fine. I'm sure the family's fine. We're just taking it a day at a time and just keeping a good attitude about it. It's all about our mindset. I mean, as we think, we become, right? Yes, he is doing a lot. I think he should need rest, a little rest, because he's making a very big thing. Well, he is. He ran into some trouble a couple of years ago because he wasn't resting, and they ended up in the hospital over a couple of things. And I think the doc kind of rebuked him or chastised him a little bit. I think he's tried to slow down. I believe his wife tries to help him as much as she can as well. But the man is driven. He's motivated, and he's not motivated by pure profit. He's motivated by doing what's right because it's right and trying to offset the corruption that we see in the world and just trying to make life better for everybody. So, my hat's off to him. I'll support him in any way that I can. And I appreciate what he's doing. And even if for some reason, on passive doesn't happen the way we expect it to, I'm wonderfully grateful for the opportunity to have met people like you and everybody in the founder base. I mean, how many
how many do we have? Hundreds and hundreds of new people that we've met. They're doing webinars and they're doing talks. I wouldn't do half of the stuff that I'm doing, because of OnPassive. But yeah, we're all looking forward to the money, but it's Mm, coming. It's coming. yes, yes. I think he has more patience than founding member because he is facing himself these issues. We are just waiting. Yeah, We are not yeah. doing anything. So I've seen him in the past, Waseem. You bring up his patience, and you're absolutely right. He's got a way of looking at things that I was totally marveled at. I saw it first about 4 years ago, actually, closer to 5 years now, where mm, he was treating members of OnPassive that had really treated him badly, but he was treating them very nice in a way that I don't understand how he did it. I would have kicked him out and I would have been done with him. And he's like, no, we don't want to do that. We want to bring them away to our round of thinking, and that's the way he looks at life, and that's the way he looks at people. It hurts when he has members of OnPassive that do things, that are bad for OnPassive and maybe are bad for Mr. Mufar and his family or other founders. But at the end of the day, we really want everybody to be of a mindset that says we're all in a good position. We're going to be in a better position. We're going to be able to help lift those around us. And that's the day that we're waiting for. And we all want to treat each other with respect, with consideration and compassion, which we know that we've got, and use that compassion driving us forward like Mr. Mufara does with compassionate action to lift those around them. Uh, and again, I'm just kind of talking here, but you got to love how the whole thing's set up. Thank you very much. Thank you very much, sir, Jeffrey, sir, for your precious time and for. I think people are satisfied now about billing address. I think billing address is not a big thing, but No. they are making is big. They are making big because I think people are thinking the billing address with with matching with O verify. That's why they are confused because they're thinking about documentation like that. But I think in billing address no need to any I think You're right. bank address is not necessary. I mostly leaders are saying bank billing address should be bank address, but I think this is not. I think thing will be Yeah. clear after update. We'll get update from company. Thank you I very much. think you're So right. please stay here. Please stay here, and we are signing out from this live stream. Bye bye.